तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अडॉप्शन कैसे हुआ क्विक कॉमर्स थ्रू आइसबर्ग मॉडल। अब हम वही आइसबर्ग मॉडल से समझेंगे कि हाउ दिस क्विक कॉमर्स इज अ मनी बर्निंग मशीन। सो इवेंट्स आर मोस्टली ओवरलैपिंग विद अडॉप्शन ओनली। रेवेन्यू सर्च 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, जो कि 4400 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन लॉसेस भी ईयर ऑन ईयर बढ़े। इट्स अप टिल एट हाई एज 1081 करोड़ ड्यू टू इंटेंस सब्सिडी वॉर्स, जो कि क्रिएट हो ही रखा है। Zepto, Blinkit, Instamart, they all are in a cat fight. Discounts and free delivery continue to drive financial strain. India is a price sensitive market. So जो सस्ता देगा हम उसके पास जाएंगे। इट्स जस्ट आवर माइंडसेट। डार्क स्टोर का फुटप्रिंट जो है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। Basically 360 new dark stores have been added in their network. That is only in quarter 1. So these events are generally fueled by some patterns, which are cash burn patterns here. But जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 4670 करोड़ से तो बढ़ा, लेकिन जो मार्जिन है वो 5.6% से डिक्रीज भी हुआ, क्योंकि सब्सिडीज इंक्रीज हो रही है एज द न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन द मार्केट डेली। Amazon, फ्लिपकार्ट ने भी अपने नए वेंचर्स क्विक कॉमर्स के डाल दिए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो स्लाइटली इंक्रीज भी हुआ 465 से 527 तक, लेकिन वो कॉस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो बेसिकली देयर आर 4 पैटर्न्स दैट आर फॉलोड बाय दिस। फर्स्ट इज डार्क स्टोर का केपेक्स। इट इज अ वेरी हेवी सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट दैट इज 50 लाख रुपीज, और ये जनरली इंक्रीज ही होता जाएगा विद द इन्फ्लेशन, लेकिन ये तो वन टाइम ही है। मंथली ऑपरेशन कॉस्ट जो एक डार्क स्टोर की है वो 10 to 15 लाख रुपीज है। और डिलीवरी पार्टनर का जो इंसेंटिव है, बेसिकली जो डिलीवरी बॉय एक डिलीवरी करने जाता है उसको जनरली 30 to 40 रुपीज का पे करती है जेप्टो, ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट। But they can't collect that from customer because customer will fly away. They only collect 10 to 20 or max to max 30 sometimes. So loss in each order. $660 million of funding अभी तक इसमें रेज हो चुकी है, एंड इट्स जस्ट फॉर गेनिंग द यूजर्स, इंक्रीजिंग डार्क स्टोर्स, गेनिंग मार्केट शेयर एंड मार्केट शेयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ अ क्विक कॉमर्स। सो एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूनिट इकोनॉमिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ईच डार्क स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी से। सो लेट्स सपोज एक डार्क स्टोर पे एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू आया है 300 रुपए का। अभी जो मार्जिन रेंज होता है एक डार्क स्टोर का वो जनरली lies in between 4% to 40%, where groceries are the hero products, which generally gives 18 to 40%, and FMCG, दाल चावल तेल, ये जनरली 4 से 15% तक का मार्जिन रेंज रखते हैं। सो लेट्स टेक द एवरेज मार्जिन रेंज दैट विल बी 20%, एंड सो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 पे 20% का मार्जिन हमारा 60 रुपीज हो गया। अब ये जो डार्क स्टोर है इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका रेंट, उसकी सैलरीज, उसकी इलेक्ट्रिसिटी। सैलरीज 24/7 स्टाफ रखना पड़ता है डिमांड इंक्रीज की वजह से, और रेंट तो भी दे जनरली टेक प्लेसेस इन अ बैक एली बिकॉज इट डजंट नीड टू बी फ्रंट, सो उसका जनरली एक लो कॉस्ट। सो ओवरऑल इट डजंट इंक्रीज मोर देन 10% ऑफ द रेवेन्यू। सो इफ यू टेक इट फ्रॉम द ऑर्डर इन प्रीवियस स्लाइड, वी हैड 300 ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू, उसका 10% 30 रुपीज होगा, ये कटेगा मार्जिन में से। 60 minus 30, we have 30 rupees left in our margin. Now the final blow is delivery cost. So the last mile delivery cost करती है 25 से 50 रुपीज पर ऑर्डर, और ये पूरा मार्जिन एक तरीके से खाई जाता है, बिकॉज रिमेनिंग मार्जिन कितना था, 30 रुपए, डिलीवरी कॉस्ट 25 से 50 रुपए, रिजल्टिंग लॉस इट्स जनरली 15 to 20 पर ऑर्डर। अगर हम पूरी बिग पिक्चर में यूनिट इकोनॉमिक्स देखें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 था, ग्रॉस मार्जिन 60 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपए, डिलीवरी कॉस्ट 50 रुपए, नेट प्रॉफिट ईच ऑर्डर के साथ 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इट जनरली मल्टीप्लाई क्विकली विद द वॉल्यूम। ये सारे पैटर्न्स थे, बेसिकली पैटर्न्स का यूनिट इकोनॉमिक्स था। अब वो पैटर्न को जो सपोर्ट कर रहे हैं जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो है जनरली लेबर इंटेंसिटी, मतलब 24/7 मिनिमम 15 to 20 स्टाफ आर रिक्वायर्ड ऑन अ डार्क स्टोर, एंड ऑल्सो with inflation their cost will rise. Tech, basically इनका AI routing, इनका optimization algorithm, इनके engineers, cloud etc, that is also a huge cost. Funding model के risk भी है, investor को बस growth at all cost चाहिए, they'll give you the money, just get the users. User acquisition cost बहुत high हो चुका है because of multiple competitors in the market. So एक user को acquire करने के लिए 50 to 100 रुपीज लगता है, और वो भी उन्हें वापस लाने के लिए 12 महीने लग जाते हैं। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स के लिए एक काफी 3 मेन जो माइंडसेट है, और वी कैन से मेंटल मॉडल्स, दोज आर स्केल फर्स्ट, मोनेटाइज लेटर। दिस इज द मेन प्रॉब्लम वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट promoted, growth is promoted at all cost.
This culture delays profitability by prioritizing expansion over early revenue. And also, India is a price sensitive market. Hence, consumer expect free delivery, better margins, and ultra fast service. And whoever will pay the less, they'll go to them. It's just Indian mentality. And network scale belief, कंपनीज ये assume करती है कि एक बार वो masses को hit कर ले एक city में तो उनका यूनिट इकोनॉमिक्स खुद ब खुद इंप्रूव हो जाए, लेकिन वो कभी स्ट्रेस टेस्ट नहीं करती कि ये जो डेंसिटी का जो लोग प्रीमियम भर रहे हैं, क्या वो ये इनके डार्क स्टोर के हैवी जो ओवरहेड है उसको कभी बैलेंस आउट भी कर पाएगी कि नहीं। तो ये अभी तक हमने डिटेल में समझा। नाउ लेट्स टेक इट फ्रॉम अपर व्यू दैट इवेंट्स दैट हैपेंड। सो रेवेन्यू सर्ज वर्सेस वाइडनिंग लॉसेस, हैवी सब्सिडीज और डिस्काउंट्स, ये सारे इवेंट्स है। डार्क स्टोर का एक्सपेंशन भी हुआ, we can see that in a backfoot expansion view. So accelerating burn per order, ये तो widening losses का direct pattern है। Rising cost to serve, inflation के साथ साथ delivery partners की fees बढ़ती जा रही है, staffs की fees बढ़ती जा रही है, and also at a time dark store cost will also increase. So yes, investor back growth at all cost, इसकी वजह से dark store का expansion हो रहा है, heavy subsidies हो रही है, etc. Complex logistic networks, dark store का network we all know, consumer acquisition machinery and growth focused funding ecosystem, the main problem we know. इन सब के पीछे जो मेंटल मॉडल है जो सपोर्ट कर रहा है सबको, वो है एक जीरो फ्रिक्शन को इंक्लूड करना, जिसकी वजह से ये क्विक कॉमर्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है कि यूपीआई आ गया, वो भी सपोर्ट कर रहा है, और एप्स भी इन्होंने इतना फ्लो स्मूथ बना दिया है कि ऑन डिमांड हैबिट्स जो है वो बढ़ चुकी है एक तरीके से। इंस्टेंट एवरीथिंग हैबिट, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, जस्ट क्लिक द ऐप एंड गेट द ग्रोसरीज इन योर हैंड। एंड ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट, उसकी वजह से ही हमारे वाइडनिंग लॉसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और नेटवर्क स्केल बिलीव, राइट नाउ दे आर एट लॉस, और Zepto और Blinkit ने प्रोजेक्ट भी किया है कि they will be able to balance out by late 2027 or 2028. How they are doing that? So they have generally three levers. पहला, to increase the average order value. So we can see that 2023 में 450 average order value था Zepto का, and by 2025 it has increased to 550. And this follows for all Swiggy and Blinkit. So yes, they are working over it. And other 2 points, they are increasing the dark store density. So previously, one dark store serviced 2 to 4 kilometers. But if they increase two dark stores there, such as that each dark store will be covering 2 kilometers of range, then basically it will increase the high order volume for per square kilometer. So basically just optimizing the fleet utilization, और एक ही driver multiple deliveries कर पाएगा in the same time. And monetizing with advertising. So basically, if I write chocolate and utilize promoting it, Zepto and other platforms can benefit from it. So these are the strategies जिसके ऊपर ये लोग अपना platform profitable कर सकते हैं. Subscribe, please.